Hello students, how are you all? I hope your preparation for exams are going on well, right? So there are many questions people ask as to how to prepare, how can I proceed with the competitive exam, how to prepare a great base for competitive exams. So today in this video we are going to discuss how we are going to prepare a strong base for our competitive exams. Firstly, I would like to say you should be aware of your syllabus. देखो, अगर आप लोग को सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो आप कभी भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. What happens is there are various sections to our competitive exams. बहुत सारे फॉर एग्जांपल बैंकिंग में होता है, जीए होता है, इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स. What we have to do is we have to know about our syllabus. कौन सा syllabus कहाँ पे है, what are the changes that are being made in the syllabus, कौन कौन questions आ गया है, what is the exam pattern, कितना मार्क्स डेडिकेट होता है वहाँ पे, कितना टाइम मिलेगा, कट ऑफ लास्ट बार कितना गया था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलेबस में क्या क्या है. If we are aware of this, I am sure you will prepare a strong base for your competitive exam. Because बहुत बार होता है कि आप लोग बैंकिंग करने जाओ तो आप लोग को बोला जाएगा बैंकिंग के साथ एसएससी दे दो, रेलवेज दे दो, सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है. There is quite a lot of differences in banking, in the way you prepare for railways, in the exam of your SSC. There are various अलग अलग subjects होता है, अलग अलग time dedication होता है, अलग अलग question pattern होता है. There are various varieties in the syllabus that you have. So I will advise you, whichever exam you are preparing, please be aware that what your syllabus is. Syllabus जाने बिना we cannot proceed or we cannot expect ourselves to have a great base for our competitive exam. So I will write here, aware of syllabus. Next, practice. The more you practice, the more efficiency level of yours will increase. You will become more efficient and your time to do one sum or to solve one reasoning question, one sitting arrangement, one puzzle, the time you take will reduce. So practice more of the questions possible. You will have materials to solve, from where you will get questions. You have net access, you have Google, you have friends also appearing for competitive exam. उन लोग के पास भी अलग सारा questions होगा. So my advice to you is prepare a lot of questions. ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आप लोग को कि चलो एक चैप्टर कर लिया, उसका प्रिपरेशन हो गया, उससे 10 सम कर लिया, सो आई एम वेल टू गो थ्रू. नो, ऐसा आप लोग अगर करोगे then what will happen in the exam? You will find there are different types of questions coming, various other type of questions coming which you haven't prepared, and I'm sure you don't want to take chances for your competitive exam. You want to crack it in the first go. So trust me, if you practice more and more, you will be able to be successful, right? Thirdly, I want to say you solve as much questions possible. जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. एक तो
जो पहले कर लिया क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर सकते हैं, फाइन. नेक्स्ट यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व न्यू क्वेश्चंस. हर रोज अलग अलग क्वेश्चंस बनता है, सो यू सॉल्व देम. यू गेट इट इन पेपर्स, यू गेट इट इन वेरियस स्टडी मटेरियल्स, यू गेट इट ऑनलाइन, यू गेट इट ओवर गूगल. सो सर्च करो, थोड़ा रिसर्च वर्क करो, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व. For competitive exams there are so many questions available, and I'm sure क्वेश्चन करके खत्म नहीं कर पाओगे. So many questions available, so solve as much as you can. The more questions you solve, the more perfect you will become. And as I always say, practice makes a man perfect. तो जितना practice करेंगे आप लोग, जितना solve करेंगे, you will be able to reach the cutoff marks. Next, I would like to discuss one very important point, that is dedication. Now, what is dedication? Dedication is something that you are required to have for your competitive exam. अगर आप लोग डेडिकेटेड नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यू वांट टू स्किप समथिंग और यू वांट टू स्टडी, आज चलो नहीं पढ़ाई करते हैं, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, दैट इज फाइन. देयर विल नॉट बी एनी हार्म प्रोवाइडेड व्हेन यू आर स्टडिंग you are fully dedicated to it. I always advise you, 12 घंटा पढ़ो कि 20 घंटा पढ़ो, इससे जितना एफिशिएंसी आता है उससे अच्छा एफिशिएंसी आता है अगर आप लोग 2 घंटा पढ़ाई करो बट अच्छे से करो, फुल कंसंट्रेशन लगा के करो. Then what will happen? You will get the best out of it. You will be able to get the best result out of it, and पढ़ाई आपका दिमाग में जाएगा. Study, take a break of 5 minutes, रिफ्रेश योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ. कुछ खाना खा लीजिए, अपना पेट से थोड़ा बातें कर लीजिए, उससे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, थोड़ा वीडियो गेम खेल लीजिए. टेक अ ब्रेक फॉर 5-10 minutes, देन अगेन गेट बैक टू स्टडी. डोंट टेक a continuous time period for studying, and that will become very monotonous. वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, हम लोग का दिमाग जैम हो जाता है, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, we will not be able to solve any questions, or that will not get into our heads. So what we have to do, be dedicated. Definitely ऐसा नहीं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 महीना तक बाहर जाना बंद, खाना पीना बंद, फ्रेंड से मुलाकात बंद, तब ऐसा नहीं चलेगा. What will happen? You stay focused, be dedicated, also refresh yourself, reward yourself, and I'm sure your studies will then carry on finely. हमारा दिमाग जैम नहीं होगा, and we will be able to solve the questions to our best of ability. Fifthly, I want to discuss passion. You should be having passion enough to be focused for your competitive exam. Yes, others can be an inspiration to you, but they cannot be your passion. आपको खुद से आपका पैशन ढूंढना है कि मुझे बैंकिंग में एग्जाम देना है. आई वॉन्ट टू बी अ बैंकर, आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड टू अ बैंक, आई वॉन्ट टू बिकम अ बैंक मैनेजर. तो अगर आपका ये पैशन खुद से नहीं आया, चाहे कोई भी बोल ले, बच्चा बेटा ये पढ़ लो, बैंकिंग का एग्जाम दे दो, रेलवेज का एग्जाम दे दो, आरबीआई का एग्जाम दे दो, you will not be able to pass that. Why? Only because you are not feeling the target or the passion from inside. तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है. चलो मम्मी बोल रही है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं एग्जाम दे ही देती हूँ. फादर इज फोर्सिंग अस, लेट्स गिव द एग्जाम टू कीप आवर फादर्स क्वाइट, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो बार बार खिच खिच करे मेरे पीछे. चलो एग्जाम दे ही देते हैं, एक बार से छुटकारा मिल जाएगा. No, if you do like this, you are never going to crack your exam. इससे आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे. आपको खुद से ढूंढना है कि आपको क्या करना है, कौन सी सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, रेलवेज में जाना है. Yes, others can serve as an inspiration. Your friends maybe Ram has got the job in bank, so you might
think अच्छा उसको जॉब लगी है मुझे उसकी तरह बनना है. नहीं, उसके तरह नहीं बनना है. You should have your passion that is coming from within. They can definitely serve as an inspiration to you, but you have to identify which passion or what passion you are interested in. Only then you can become or you can have a good base for a competitive exam, right? Next I will discuss notes. You should be preparing notes for yourself. If you don't have notes मतलब किसी का बनाया हुआ notes नहीं, अपना खुद से बनाया हुआ notes. Now you will think, why do I have to prepare notes when I can already possess notes of somebody, or भैया ने exam दे दिया उसका crack हो गया, I can already have his notes. You can have definitely, but I doubt how much effective that will be to you. By notes I mean notes that you are preparing. एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उससे आप खुद से नोट्स बनाइए. Because what happens, इतना syllabus होता है, after we complete one chapter, it is very difficult for us to get back to the previous part of the chapter or to the previous chapter. If we prepare notes, what happens, we are writing and it is getting all the more registered to our brain. So what will happen after completing or after few months of time, थोड़ा syllabus आगे बढ़ गया, what will happen when we come back to the first chapter, हमको ये नहीं लगेगा ए पापा ये तो नया है. We will not feel that. What we can do is then we can go through the notes that we have prepared, and then you can see you are recapitulating everything that you have studied. 2-5 मिनट रिवाइज करके आप लोग को सब कुछ याद आ जाएगा. So this is the magic trick of notes. खुद से notes बनाइए अपने भाषा में, maybe in short forms or in scribbles, whatever is comfortable, ताकि आप next time वो follow कर सके, ताकि next time जब आप वो पढ़े अपना खुद का notes, you are able to remember whatever you have studied. And trust me, this is a trick that I had also been using for competitive exams, and this was really very beneficial. This will not harm you. This will उल्टा क्या करेगा, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा कि आप इसको अच्छे से फॉलो करिए, and I'm sure you will be able to prepare a good base for competitive exams. Next I would like to say is revise. आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, what will happen, you will lose the contact with your previous chapters or previous syllabus. What will happen, revision will make you an expert in the subject or in the field that you are studying. एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको समझ लिया, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नोट्स प्रिपेयर कर लिया उसको एक बार फिर से रिवाइज करो. अगेन गेट बैक टू द चैप्टर, रिवाइज करो अच्छे से. फ्री टाइम जब भी मिल रहा है वो चैप्टर दिमाग में दोहराओ. Recapitulate it within 2-5 minutes. Ask yourself questions. See that if you can answer those questions or not. दिमाग में छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा questions पूछ लो खुद से, so that you are able to understand. वो चैप्टर अपने दिमाग में गया और you want to revise it again, you have to go through it again, फिर से पढ़ना पड़ेगा, whatever. रिविजन करे बिना आपको समझ में नहीं आएगा that are you okay with that chapter, can you proceed on to the next, or you have to go through the chapter again. और भी थोड़ा questions करना पड़ेगा, और भी थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा, कोई और स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा. You will be your best analyst. You know what to do best for yourself. अगर आपको लगता है कि 1-2 चैप्टर करके रिविजन करना पड़ेगा, fine. I will advise you, prepare short portions. छोटा छोटा करके चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए. Study one portion, revise it, and then go to the next. This is really very beneficial. Lastly, I would like to say, whenever you are studying, you should be studying like a teacher. Teacher लोग क्या करते हैं? Whenever they study, it is as if they have to explain it to somebody or to the student sitting in front. If you are studying in that way, and if you study कि मुझे ऐसे पढ़ना है कि सामने जो बैठे हैं मेरे students हैं, and I have to explain it to them, that will really be of great help to you.
चाहे आप किसी को एक्सप्लेन करें या ना करें, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं, खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। When a teacher is explaining, her concepts are very clear, she is very focused. उसको अपना चैप्टर में कभी डाउट नहीं होता है कि ये अगर बच्चा पूछेगा तब हम क्या जवाब देंगे। A teacher is always focused. So if you act like a teacher, preparing yourself as a teacher ताकि सामने जो बैठे हैं उनको explain कर पाए, I'm sure the entire chapter will be very clear to you. Yes, this might sound a little bit awkward कि हम student है तो why will I prepare myself like a teacher explaining it to somebody else. But though it might sound crazy, try कर लीजिए एक बार, थोड़ा पढ़ लीजिए टीचर की तरह, ताकि अगर कोई स्टूडेंट हो भी नहीं then also no problem, you explain it to yourself. You then act as a student and explain it to yourself कि अच्छा ऐसे 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 करना पड़ेगा, then only we will arrive at this conclusion. फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, okay fine, अगर ये हो गया I'm good to go through and I'm okay to proceed on with the next, it's fine. अगर आप ऐसे ही करोगे, I'm sure you will have a good competitive base. Because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, there are so many competitive exams and there are lakhs and lakhs of people appearing for the competitive exams. But how many of them do crack it? You know very well, because बहुत कम लोग हैं जो ये competitive exam crack कर सकते हैं. This is a very coveted position that we want, and for that there is a lot of competition. So अगर सबको पीछे हरा के हमें आगे बढ़ना है, it is very much advisable if you follow all these points that I have discussed in this video. I'm sure you will have a great base for any competitive exam. चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आरबीआई हो, आरआरबी हो, anything. These are the basic things that if you prepare well, I'm sure you are going to get through the syllabus well. You will be able to have a good, proper way to give an exam, and I'm sure you will be successful at it. So I will advise you, follow these points, go through this. आप लोग सिलेबस के बारे में पता लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए more and more questions, remain dedicated, अंडरस्टैंड व्हाट पैशन यू हैव, कौन से एग्जाम आपको देना है, नोट्स बनाइए, टीचर की तरह पढ़िए ताकि सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाए. एंड लास्टली आई विल से यू शुड रिवाइज. द मोर यू रिवाइज, द मोर बेटर you will be at your exam. So that's all for today. I hope that you have liked this video and you have understood whatever I have explained. So follow this and I'm sure you will be successful in your competitive exams. So all the best, and stay well, prepare well, and that's all. Thank you.